All right. So here is the second. Thank you very much, Azra, for reminding me. Thanks a lot. I usually miss this one thing. So thanks for reminding. And here we go. Thank you very much for joining me again this session. This is the second lecture of our understanding of the pen tool in the Photoshop. Okay. So we were actually trying to develop some kind of different shapes with the help of pen tool. So अभी हम ये करेंगे कि इसी लेयर ओनली वन लेयर के ऊपर एंड बाय द वे देयर इज नो लेयर इन दिस सेक्शन हियर पाथ के ऊपर जाके वर्क पाथ में जस्ट वन लेयर हमारे पास है एंड एक ही लेयर के ऊपर हम काम कर रहे हैं वी आर डूइंग नथिंग अदर देन दैट ओके सो लेट मी अगेन प्रेस विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं एंड हियर इट इज दिस सिलेक्शन ऑफ दैट अब अगेन वही सारी की सारी चीजें दोबारा से रिमाइंड भी आपको हो जाएंगी एंड लेट मी रीडू दिस होल थिंग कि विद द हेल्प ऑफ आल्ट की कंट्रोल की माइनस प्लस ये सारी की सारी चीजें कैसे आपने करनी है वेरी इजी इतना सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए एंड यू गॉट टू बिलीव मी ऑन दिस कि मुझे ये एक टूल सीखने के लिए कम से कम 10 इंस्ट्रक्टर्स चेंज करने पड़े थे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस टाइम इंस्ट्रक्टर्स को भी इन टूल्स का ज़्यादा आइडिया नहीं था एंड बाय द वे इट टुक मी 4 months टू अंडरस्टैंड कि ये कंट्रोल और आल्ट की और ये चीज़ें कब मैंने किस जगह पे कौन सी चीज़ करनी है बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम क्योंकि ना हमारे पास एज सच कोई रिकॉर्डिंग थी ना हमारे पास जूम का ये सेशंस अवेलेबल थे और ना ही यूट्यूब की फैसिलिटी अवेलेबल थी जिसकी वजह से आज से कोई 15 years back. So it took us a lot of time to understand. But today, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी माइंड इतनी तरक्की दे दी अल्लाह ताला ने इंसान को कि with the help of these gadgetries and technology things, now we can not only create. I can tell you the person who is sitting other part of the world, live sessions, and with the help of YouTube, you can go to the channel and review it at any time with your wish and will. So let's get back. Okay जी अगर at any time if you are interested to delete any of the part आप by default there are 1 2 3 4 and 5 parts. Okay, first understand we created 5 parts and how we created यूं एक क्लिक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर इस तरह क्लिक्स करते हुए हमने at the end फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया तो ऑटोमेटिकली एक शेप बनती ओके अब हमने इस शेप को करना है चेंज विद द हेल्प ऑफ पेन टूल से सारा कुछ हमने पेन टूल की मदद से करना है फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड जैसे ही क्रिएटेड एंकर पॉइंट इसे वैसे बाय द वे एंकर पॉइंट कहते हैं अब एंकर पॉइंट के ऊपर आप आएंगे सो बाय डिफॉल्ट दिस मींस यू आर ट्राइंग टू डिलीट इट बिकॉज ये तो ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पे जहां पे एंकर पॉइंट नहीं बना हुआ आप वहां पे आते हैं तो बाय डिफॉल्ट चेंज क्या होता है माउस क्या चेंज कर्सर क्या चेंज कर रहा है दैट यू आर ट्राइंग टू प्लस इट और व्हाट अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूं सो दैट मींस कि आप सारी की सारी शेप को किसी न किसी लोकेशन से आप चेक करना चाह रहे हैं मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा तब भी मतलब वही मैं दोबारा अंदर क्लिक कर रहा हूं मैं यहां से आके क्लिक कर रहा हूं तब भी वही मतलब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं मैं इस एंकर पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक कर रहा हूं तभी मतलब वही लेकिन अगर मैं एंकर पॉइंट के ऊपर दोबारा क्लिक कर रहा हूं और कंट्रोल की मेरी प्रेस है सो दैट मींस आई एम इंटरेस्टेड टू select this one anchor point rather than all अच्छा और all को कैसे select करना है you can just select the whole area of course ये वाला एरिया नहीं क्योंकि ये वाला एरिया select करेंगे तो वो भी सिलेक्शन में आ जाएगा इसका ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्शन में आ गया सो आई एम इंटरेस्टेड कि नो क्लिक आउटसाइड समवेयर जहां पे कोई एंकर पॉइंट नहीं है और इतना से एरिया सेलेक्ट करें सो ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गया नाउ अब आई एम इंटरेस्टेड टू मूव इट समवेयर एट अ फ्री लोकेशन जहां पे मैं इजीली इसको काम कर सकूं सो मैंने जस्ट कंट्रोल की प्रेस की हुई है एंड मैं जस्ट उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आया विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कंट्रोल की मैं इसको इधर या मे बी इन द सेंटर मे बी समवेयर हियर किसी भी लोकेशन के ऊपर मैं जाके इसको प्लेस कर दूं सो जस्ट माउस के क्लिक छोड़ दें सो दैट मींस कंट्रोल की भी छोड़ दें नाउ यू आर अगेन इंटरेस्टेड टू क्रिएट आइदर क्रिएट विद द हेल्प ऑफ प्लस विद द हेल्प ऑफ एंकर पॉइंट पे जाएंगे तो माइनस क्योंकि मैंने कोई की प्रेस नहीं की ओके सो इस पे क्लिक करें जस्ट तो वो माइनस हो जाएगा दैट्स एज सिंपल एज दैट
अब ये शेप आपको खुद से बिल्ड करनी है। बीइंग ग्राफिक डिजाइनर, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये एंगुलर शेप किस चीज की बनती है। ओके, अगर आप इसको कोई शेप बनाना चाहते हैं इससे और बिल्कुल ऐसे ही इस तरफ, सो दैट मीन्स कि दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज में कि इसके अंदर अभी अभी आपको मैम जवेरिया प्लीज कंफर्म करें मुझे, आपको आइडिया हो गया दैट व्हाट वाज योर क्यूरी एंड हाउ कैन यू डिलीट दिस एंड हाउ कैन यू ऐड दिस, वो क्लियर हो गया? Okay, perfect. So let's move to the next one. The next level is, okay, now I'm interested to fill something inside this box. How can we do this? Just press करें Control plus Enter key. So that means कि sorry ये दो एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हैं, चारों सिलेक्टेड नहीं है। ओके, सो चारों के चारों सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस एंटर करें, सो दैट मीन्स इस लेयर के ऊपर जितनी चीजें हैं वो सारी के सारी सिलेक्ट। नाउ undo this, I am not at all interested कि मैं सारी की सारी चीजें सेलेक्ट करूँ। I am interested कि just first one वाली शेप को सेलेक्ट करूँ। the remaining shape is not as such I am interested, लेकिन वो गई किधर? नो प्रॉब्लम, आप आए वर्क पाथ पे जस्ट क्लिक करें, here we are। ओके, सो मैं इस शेप को क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई थी, मैं सारी की सारी को यूं करके सिलेक्ट करता हूँ और कर देता हूँ डिलीट फॉर द टाइम बीइंग because I'm not interested। Or what you can do is कि undo करें and control plus X means cut करें and let's create a new work path and paste that area into this one, correct? So this is something very easily you can do. Now get back to work path number one. This is something on this work path one, this is path number one, that is this one। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों सेपरेट होने का, what is the advantage and what does this mean। So click on this, I'm interested to fill out some colors inside this, control plus click on this layer, that means selection has been done। Okay, now what exactly is the color which you are trying to fill in this? Tell me, who is going to tell me? Let me announce some name. uh, Anisa Bakhtiar, are you there? Anisa? I think she is not available or she's not interested. So let's move. Nurul Muntaha, are you there? Let's pick one from the top, one from the bottom. Nurul Muntaha, you there? Okay, okay, go ahead. Noor, can you please confirm around the page? Here's a query from the genius guy Malik Abdullah. Sir, how to move this shape around the page? Around the page, मतलब clear नहीं हुआ? Please elaborate. थोड़ा सा इसको और explain करो. Everything is possible. मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुझे understand नहीं हुआ, so that means कि हो नहीं सकता. So let me tell you. So can you repeat the question? Acha. The question exactly is right now, I'm just naming it, that who is actually going to participate with me. The question hasn't came yet. Acha, by the way, this is a shape we came up with something like, ठीक है ना? Okay, so what we are going to do is कि हमने इसके अंदर कोई color fill करना है. How can we pick the color and how can we drop the color inside this one? चलो पिक के लिए मैं आपको बताता हूँ, दैट्स द कलर पैलेट। मैं यहाँ से जाके कलर पे जाता हूँ और लेट सपोज मैं ये थोड़ा सा शार्प किस्म का ये वाला रेड कलर पिक करता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं इसको, या दैट्स द वन। ओके, एंड हाउ कैन वी put this color inside this? No one is supposed to answer other than Nurul Muntaha, because I know that she knows the shortcut of putting this color which is actually on the front end। आप किस शॉर्ट की से इसमें प्लेस कर सकते हैं? नूर, can you hear me? Very well done, excellent, 100 out of 100, exactly right, absolutely right, alt plus backspace, here we go, correct। Now control plus D is for the deselect। Thank you very much, Noor. You are absolutely right. Perfect. So that means you are actually following my lectures on
रेगुलर बेसिस. सो हम अब करते ये हैं कि दिस इज द शेप वी क्रिएटेड. हम अब उसने हमने उस शेप की मदद से उसके अंदर कलर फिल कर दिया. That is something, the first thing. Tomorrow I would request anyone, please remind me, हमने इसके अंदर पहले ग्रेडियंट अप्लाई करना है, फिर ग्रेडियंट से इसकी शेप को 3D शेप में कन्वर्ट करना है. That is our tomorrow's class. So that is something which we will be doing this on tomorrow. Okay, so that's how, dear students, you can eventually create any different type of shape, put in your name somewhere here and post inside और व्हाट्सएप के ग्रुप पे पोस्ट करें, सो दैट कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी चीज़ों को ना सिर्फ देख सकें, अप्रिशिएट कर सकें एक दूसरे को, बल्कि एक अच्छे तरीके से हम उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें. सो ये था पेन टूल. इन टूल्स की मदद से आप कोई भी शेप क्रिएट करना चाहें आप क्रिएट कर सकते. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक. आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर. एंड ये दोनों बल्कि तीनों सेशंस आज के, फर्स्ट द मोटिवेशनल स्टोरी, द सेकंड वन वाज द इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेन टूल, एंड देन द सेकंड पार्ट ऑफ द पेन टूल, ये थोड़ी देर में अराउंड 6 बजे के बाद, 6:30 ऑनवर्ड, मगरिब के बाद, दे विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल. I would request, please, a thumbs up for the channel, and I personally would request to all of you के उनको रिव्यू करें लाजमी जाके, so that के आपको उससे कोई बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल सके.